first film that in 1957 we sent was Mother India, and the last film in 2024 was Lapata Ladies. So friends, today's afternoon is all about this Oscar thing, so which we are planning. The submission procedure will start from 15th of August. 15th of August, the submission will start, and it will be till 10th of September. This 25 days are there for producer and director to submit their film, and the procedure of submission and everything is given in the website. And right now we are in the process of forming the jury. As per the Academy rule, we can take up to 25 jury, the maximum limit, and as per our internal rule, our maximum is 19 and minimum of 11 jury. So this we are on the process of finalizing it as per the Academy rule we are doing. Yeah, this is as per the Academy rule and as per our internal assessment, we finalize the jury from different representative field, from director to producer to actor to editor to costume, various field and various languages. So this and the screening process will start from 12th September, and as per the submission of the film, the duration of the day will be, and we will be, the procedure is that whatever film a person is submitting, that film have to be released, have to have a theatrical release for a week by 31st of September 2025. It should be from 1st October 2024 to 31st of September 2025. One clear week of commercial release. This is the criteria. The film which is selected should have that thing. And so now I leave it to you. So if you have any question, I think that will be better. We will answer you back. Sir, I would like to ask the President, generally after the selection of nomination of a film, there are a lot of controversies regarding the film chosen by different sections. So what care have you taken this time around? See, it's very difficult to take care of a controversy. You know, if 30 to 40 films on average people submit, so definitely we can only send one film. So the rest film will always say that there is some problem with the selection. That we as per our rules and regulations, we try to formulate the best person as a jury member board, and it is totally up to the jury to select the film. Criteria. So when we have a jury, we have to depend on them. Whatever they say, whatever the film they select, we have to obey that. After the selection of the film, it said that the Oscars, the film is not promoted properly by our India. So what steps will you take this time around to promote the film in Oscars? Generally what we have seen, if the film mother language, if the film is from Assam, the last time when this Village Rocker was selected, the Assam government has given a grant of 1 crore rupees, and also the central government has given, I don't know the exact amount. So it is once the film is selected and the producer thinks or the director thinks they need the support of financial support to promote the film, generally they approach the state government and the central government, and in maximum time it had been supported by the respective state government and central government. Hi, this is Center here. Mayur here from Beyond Bollywood. मेरे दो सवाल हैं प्रेसिडेंट जी से. पहला तो आपने कहा कि जो प्रोसेस है उसके अनुसार किसी भी फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज मिनिमम 1 हफ्ते तक उसका रन होना चाहिए. लेकिन सैकड़ों फिल्में आती हैं थिएटर्स में. कई बार ये फिल्में खासकर जो छोटी फिल्में होती हैं, भले शायद क्रिटिकली अक्लेम्ड हो, लेकिन वो शायद 3-4 दिन से भी ज़्यादा थिएटर में रन नहीं कर पाती. तो अगर यही रूल है तो क्या ऐसी फिल्म्स दे विल बी रूल्ड आउट इमीडिएटली? This is the academy rule. आप 1 हफ्ता कहीं भी चलाने पड़ेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड.
आपका कोई जरूरी नहीं है आपका पिक्चर इंडिया में एक हफ्ता चले, आप यूएस में भी चला सकते हैं एक हफ्ता। ओके ये 1 week of commercial rule should be there anywhere in the world. ओके। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि लंबा इतिहास रहा है ऑस्कर का और भारत का। हमारी बहुत सारी फिल्में जाती हैं, कुछ फिल्में विवाद हो जाता है जैसे पिछले साल हुआ था। लेकिन हमेशा सर मैं यही सोचता हूँ कि यदि भारत को एक ऑस्कर चाहिए तो क्या हमें एक ऐसी फिल्म देनी चाहिए उसे जब हम जज करते समय कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम हमेशा एक जो दृष्टिकोण है वो हमें वेस्ट की दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा कि ये फिल्म उन्हें शायद पसंद आ सकती है, चांसेस है, और ना कि मतलब कि अक्सर एक वर्ड यूज किया जाता है कि इंडियननेस। तो इस चीज में आपको लगता है कहीं वो दृष्टिकोण चेंज करने की जरूरत है? देखिए इस वक्त इंडिया इज द लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी ऑन एन एवरेज 2,500 से 3,000 पिक्चरें बनती है इन मोर और लेस 16 to 18 लैंग्वेजेस, और एक फिल्म हम भेजते हैं। दैट इज द रूल फ्रॉम द बिगिनिंग। सो डेफिनेटली वी डिजर्व टू सेंड मोर फिल्म्स। सो ऑफिशियली तो वो होगा नहीं, जो नियम है वी गो थ्रू द rules and regulation. And being myself, I am a film producer. Definitely we want Indian film to be there. I think the last film, Indian film that had gone to the top was Satyaj Ray's film, if I am not wrong. Top 3 out of 4 out of 5 ऐसा कुछ ये था, और लगान भी था शायद top. That was our highest score. तो हमारी वही ओलंपिक और ऑस्कर का दोनों की result एक ही है more or less. So we are trying, and it depend upon the maker. Definitely, see, definitely you know there are two types of film. One people make films to earn money. Some people are other type of film to get identity out of the film or get recognition through Oscar or Cannes or any festival. So there are division of two type of films. So definitely people who are aiming to aspiration to get an Oscar, so they have to follow what is the pattern they are following, in which of the pattern, which of the film they are choosing, what are the ground, what are the aspects. So this all depend upon a person who is aiming to get an Oscar out of film what he is trying to make it. Sir, but what is the criteria for jury? Every year jury gets questioned. What is the criteria for choosing the jury to select the film that reaches the Oscar? And second question, will FFI seek government support if at all a film is chosen, it doesn't have the kind of bandwidth to promote it in the West? Will the government support in terms of money, also in terms of finances also? Because last time when I spoke to you, you told me about that, you are going to appeal to the government also that FFI को support मिलेगा तो then the film can be supported abroad also. Now everybody is not an Amir Khan who can go with his to promote a Swas suffered because of that. Didn't get any kind of money to promote it in the West, which is very important for any film to reach the Oscars. At least to reach somewhere so that recognition happens. Yeah. What was your first question? My first question is criteria for jury. What is the criteria? Because every year jury question. Yes, people used to question the jury. What is the criteria this year? Definitely the criteria what we choose, we try to see that person had enough experience in that particular field and also exposure to international film and preferably a national award winner. This is how we choose. And from we try to cover jury from different languages and different field. Field means we try to get a costume designer, costume from makeup, music director, playback singer, actor, director, editor, sound recordist. So try to cover every and criteria is that person should be a well-known person in his or her field, got a good experience and a national award. Second question is about government support. FFI you had mentioned See, last time. FFI is from the beginning is fighting for the industry. We are always for the industry we try, but it is the policy of the government. We can only appeal to the government. We can only request the government to support the film.
but it is totally is the policy of the government whether they will do or not. And I have spoken to just a few months before I was having a meeting with NFDC, because NFDC will be sending few films this year to Oscar. So they have their own production, or you all know. So they will be sending 2 to 3 films. So I told them. So they are also working on it, because after these waves we had a meeting regarding this. So in the Oscar and other international arena, how we can promote our films. Because I've spoken to Guneet and some more filmmakers. They said if there are a lot of these filmmakers, actors, technicians work on the Oscar member. They are Oscar members. They know what works. Again, that whole question of what works for them, the right film that can work in the West and get us the Oscar. After, we've not even won the Oscar. लगान पहुँचते पहुँचते रह गए. तो is it possible कि government जो Oscar कमेटी के members हैं उनको आप लेंगे as a jury in the jury? Possibility, because that's what suggestions have come also. From Guneet Munga, people like Guneet Munga. She said, जो Oscar बहुत सारे लोग होते हैं ना. Guneet Munga have served as one of our jury before. Okay. Yeah, she I think 2019 she was there. She was a jury member. Okay. And just for your information, this year the procedure of Oscar will be done in Kolkata. Venue is Kolkata. सर, मैं हिंद समर्थन से शिवली रामपुरी. आपने अभी मदर इंडिया से लेकर और लापता लेडीज तक का जिक्र किया. बहुत सारी फिल्में ऑस्कर के लिए जाती हैं. मेरा पहला सवाल तो ये है कि इतनी सारी फिल्में ऑस्कर के लिए जाती हैं, चाहे मदर इंडिया से लेकर लापता लेडीज तक हो, लेकिन उनको ऑस्कर नहीं मिलता. तो क्या आज बॉलीवुड में व्यापारीकरण फिल्मों का हो गया है कि सिर्फ बिजनेस को सामने रखकर फिल्म बनाई जाती है, जबकि फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय नजरिए के मुताबिक अगर बनाया जाए तो शायद मैं समझता हूं कि उसको ऑस्कर जरूर मिले. मदर इंडिया में भी कुछ खामी रही थी जो ऑस्कर की जूरी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था. तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूं कि क्या ऐसा हो रहा है कि व्यापारीकरण हो गया है फिल्मों का, और इसलिए ऑस्कर में वो नॉमिनेट तो कभी हो जाती है लेकिन उनको ऑस्कर नहीं मिल पाता. ये मेरा आपसे सवाल है. देखिए, व्यापारीकरण तो रहेगा ही. फिल्म, देयर शुड बी सम कॉमर्स इन फिल्म. सी, देयर इज टू वे ऑफ थिंकिंग. कोई फिल्म को एज एंटरटेनमेंट सोचता है. द फिल्म मीन्स एंटरटेनमेंट. फॉर सम फिल्म मीन्स आर्ट एंड कल्चर. सो दिस इज टू वे ऑफ थिंकिंग एंड टू वे ऑफ मेकर आर देयर. तो आप जैसे बोल रहे कि देयर आर people, basically what we have seen, this so-called art film or parallel film are produced by individual or independent director or producer. The big houses, they most probably goes for commercial, because they goes for commercial because they are investing also. They also need to recover their money. So there is no harm in it, because there are people who goes to a movie to get entertained. But when you are sending for Oscar for other films, that theory is different. They see the art and craft and culture and other things. So this is the difference. So this people will be, this difference will be there. Now what you are saying that it is depend on the makers, the people who are writer, who are making the film, director, to find out what are the deficit are there in our films that are not why we are not clicking in the Oscar. It is up to them. It's not the production house or something. It's not that to get an Oscar you have to do a 100 crore film. You can get an Oscar by doing a 2 crore film. It's not that money is there. It's a procedure, I think, and you know very well that what the West think about that. Our category is international film category, international film. So it is up to the jury of them. Basically what I think that mostly film should be have the Indianness in it, that the first criteria they see, and it should be a film which is idea driven, not content driven. Because there was a time when we used to make film which is star driven. हम लोग देखते थे कौन है फिल्म में, उसके बाद पिक्चर देखने जाते थे. Then it came content driven. And now I think the time that we should have made film that is idea driven. And this is my personal opinion. So the makers will be better person to say. Hello. Yeah, I'm Prashant from NDTV.
मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी आपने चीजें बोली हैं, कुछ गाइडलाइंस ऑस्कर की तरफ से होती हैं कि आपको इस तरह की फिल्में, जैसे आपने कहा कंटेंट ड्रिवन या आइडिया ड्रिवन होनी चाहिए, और वो गाइडलाइंस के हिसाब से जब आप फिल्म चूज करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हम बात करें, आई थिंक 2 साल पहले की बात की, RRR गई और साथ में शायद चलो शो थी और वो बाहर हो गई और RRR को गाने को मिल गया। तो उस तरह से आप क्या बोलेंगे कि किसी फिल्म को हम जिस आईने से देखते हैं, जिस नजरिए से देखते हैं, वो नहीं मिल पाती, उसको नहीं मिल पाती, और दूसरी फिल्म जाके जिसने ले लिया शायद उसको हमने सोचा भी नहीं होगा कि RRR को हम भेजें। देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना, वो साल कौन कितने पिक्चर, कौन पिक्चर आए हैं। समझ लीजिए जिस साल RRR आया उसका साथ क्या क्या पिक्चर था, वो आते जूरी। तो इट इज कम्प्लीटली ऑन दैट बेसिस। हो सकता है कि जूरी जो है दे थॉट दैट RRR will be better to represent in the Oscar. So this is a very debatable topic. What you are saying is very difficult. It varies from person to person. It's perception. मेरा जो perception, if I think something is good, you might not think that is appropriate. So this is very difficult, because what I said that there are in the jury, there are people who are from who is a sound recordist, who is a makeup person. So they also take consideration all this thing in a film. Music, not only the story, not only the acting, also these things are also taken under consideration. So maybe in that league, these people have voted for RRR. People who thought that a sound designer have thought that maybe the sound design is better than other films. The costume people might have thought that the costume of RRR is better than other films. So these only खाली कहानी और स्क्रिप्ट से नहीं होता है, all these aspects are also covered. So, कोई गाइडलाइन है ऑस्कर की तरफ से कि हमें इस तरह की फिल्में हमें चाहिए? No, there is not a ABC guideline. It is that film should be Indian origin film, and the film should be shooting should be 90% at least in India. The film should have an Indianness. Okay. अशोक सर, आपसे सवाल है कि you have been a part of the industry for a long time now. आपका as a president of FTDA, आपका कुछ suggestion या take on this particular thing? You see, we are part of the industry, so everybody sitting on the dais is part of FTDA, entire industry as such. So suggestions, as those have said, one, that we have to follow the guidelines issued by the academy. Number two, the filmmakers, the producers who want to send their entry through FIDE, they are most welcome. A jury is selected with full honesty, with full credibility. We have national award winners who form the part of the jury. And there's a lot of right intentions behind the entire organization, which tries their level best to see to it that the right kind of film, with the help of jury, goes to this to represent our country. So as far as suggestions and advices are concerned, we are all in one loop together, and we see to it that the best possible film created by this country goes there and tries to win an award. तो ये बेसिकली सब साथ में मिलके पूरी इंडस्ट्री खाली एक ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरा कोऑर्डिनेट करके लोगों को बुलाना, उनके साथ बैठना, बहुत बड़ा एक प्रोसेस है, बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है, बट द काइंड ऑफ इंटेंशंस अंडर द लीडरशिप ऑफ फिरोज साहब एंड एवरीबॉडी sitting on the dais, the committee, it's a very process which with lot of right intentions, so that the correct film is represented by this country. तो सब मिलके ही होता है, इसमें कोई इंडिविजुअल सजेशंस है उसकी कोई ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, और जरूरत भी नहीं। I have a question. My name is Ramana from Bollywood Reporter. So I have two questions actually. One is, I don't see art films being made much. Artistic value of cinema is losing. So from the Federation side, are we doing anything to bring that into light, or to work on it? And the second is, are we engaging with some materials or some campaigns so that we can really go ahead and make our films up to the mark of Oscars? Two things. See, one thing is that your first question is that
what we are doing for the artistic film. See, we are a trade body. We represent the trade. So anything art and culture, if you see the history for 300 to 400 years, it was always promoted by the state. Earlier it was promoted by the ruler, the king and the rajas. They used to promote art and culture. So it needs government support. To promote art and culture and artistic things, we have to have some government support. We as a trade body cannot do anything. And to make a film to the Oscar is a responsibility of everyone. You as a press is also a stakeholder of the film industry. The role we play, you also have a bigger role to play to see a film goes to the Oscar. Absolutely, you're right. I have a question on that. As you said that we need government support. What I hear or what we know is government is really very supportive nowadays of films, as we know. There are films which are getting funded also by government. But are we encouraging or are we engaging in those programs? Because I think it's not just one person who does a film, it is a whole community that is working towards it. So what do you have to say about that? I think presently, a few months ago, we had a waves out here. So government is reviving everything, and they are planning. Even I went and met the Prashar Bharati CEO. So they have a plan to promote such film. From the script level, it's not that once you make the film, it's from the thinking level, from conceptual level, they are promoting. Once your script is ready or your concept is ready, if it is appropriate and if the committee feels that it need the support, the government will do it. That's what the mandate, recent mandate of the Prashar Bharati and the WAVE committee was. Is there an approach that one can approach? Say, for example, if I want to make a film, is there an approach? Yes. You can go to the website and see that there are not only film, it's also where short film, documentary, everything is there. Thank you. Abhay sir, as an IMPA president, सर क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है आप लोगों के बीच में जब किसी फिल्म को मतलब फैसला होता है कि भेजा जाए फिल्म को ऑस्कर की तरफ, अगर थोड़ा सा बताएं उस बारे में। तो हम लोग मिलकर के जूरी सेलेक्ट करते हैं, तो जूरी उसको डिसाइड करता है। बाकी तो प्रेसिडेंट साहब सब कुछ है वो होता है दिया सारा। अभय जी, आपको डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए कोई प्लान्स हैं सबमिट करने के? There's only feature film category. So one feature film will go as an international film category to the Oscar from India. मेरे पास काफ़ी दो सवाल है। जैसे मेरा जो अनुभव रहा है कवरिंग फिल्म्स एंड स्पेशली रिप्रेजेंटेशन टू दी ऑस्कर, जैसे पिछले 7-8 साल हो गए या मे भी 12-13 साल हो गए, 3 बार ऐसे अवसर आए हैं कि जो फिल्म हमने सेलेक्ट की है, जैसे पिछले साल लापता लेडीज आई थी और उसके रिलीज से पहले रिलीज के बाद ही फिर अनंत महादेवन जी रिस्पेक्टेड फिल्म मेकर, उन्होंने आरोप लगाया था कि ये फिल्म का आइडिया शायद मेरी कुछ से इंस्पायर्ड है। और सिमिलरली हमने न्यूटन को अनाउंस कर दिया था अब्दुल बाकी से अगले दिन ही फिर खबर आ गई थी, वरिष्ठ फिल्म क्रिटिक खालिद मोहम्मद जी ने कहा था कि ये फिल्म एक ईरानी फिल्म से शायद इंस्पायर्ड है। और बर्फी के टाइम पे तो उन्होंने शायद अपने डिस्क्लेमर में भी कहा था कि ये फिल्म इज अ ट्रिब्यूट टू द ग्रेट वेस्टर्न फिल्म मेकर। तो बताओ जोड़ी सर, मुझे वही जानना था कि जब कोई फिल्म उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ विवाद में अगर वो जुड़ जाती है, और जैसे न्यूटन में तो शायद कुछ कर नहीं सकते थे बिकॉज उसके सिलेक्ट करने के बाद ये खबर आई थी, लेकिन लापता लेडीज के टाइम में हमने देखा था कि जब से उसका ट्रेलर आया था, टीजर आया था, तब से अनंत महादेवन जी उन्होंने आरोप लगाया था। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि जूरी को उस फिल्म को शायद टेम्परेरी होल्ड कर देना चाहिए कि जब तक उसका जो मैटर है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता? So we can't do that. Once the film is censored, passed by the government, when the censor have issued a censor certificate, no one can stop that film from release or from going to any festival. Because it have to be, if any dispute is there, it should be done, settled at that, before the censor. If a government is issuing a censor, I cannot go against it. It's the government who is issuing the censor certificate. If there is a dispute, the court will hear. We take on the basis of that, and every producer, they give an undertaking also to us. So if after something is selected, if someone, that is subject to the court, but not to us. नहीं सर, ऑब्वियसली कोर्ट का तो अगर वो कोर्ट पे गया, लेकिन अगर अमेरिका में बैठे हुए आज डिजिटल एज है, खबरें तो एक झटके में 1 सेकंड में चली जाती हैं,
और अगर मैं एक जूरी मेंबर हूँ ऑस्कर का, और मैं देखता हूँ कि ये भारत में एक ऐसी फिल्म देखी है जिसके ऊपर ये कंट्रोवर्सी है, तो शायद मेरा माइंडसेट ये रहेगा कि जो फिल्म जिसके ऊपर जैसे आरोप है उसको तो शायद वो सिलेक्ट ही ना करे। तो भाग्य से लापता के साथ यही हुआ कि शायद वो फर्स्ट राउंड उसी में वो इट वाज नॉट डिस्क्वालिफाइड बट इट डिडंट मेक इट। I don't think the jury of Oscar gets swept away by the controversies. Controversy was there in the past and will be there in the future. So I don't think a committee of our academy they will go to the they will listen to the controversy. Controversy is different and verdict is different. If there is a verdict of something that this is this type, then it is different issue. और controversy तो होती रहेगी, हर जगह होता रहता है। मेरा एक आखिरी सवाल है, कुछ महीने पहले अमोल पालेकर का एक बड़ा फेमस पॉडकास्ट क्लिप वायरल हुआ था, जहाँ उन्होंने कहा कि शायद जब वो जूरी के कुछ 2014 या 15 की बात, तो उनपे किसी स्टार ने दबाव की कोशिश की थी, ऑब्वियसली वो उस दबाव में नहीं आए। तो मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से, आपके कार्यालय में कभी ऐसा हुआ कि किसी स्टार या कोई भी हो बड़े प्रोड्यूसर उन्होंने कुछ दबाव लगाने की कोशिश की कि हमारी फिल्म उसे पुश किया जाए? देखिए 1957 से हम लोग ये चीज कर रहे हैं, मैं लास्ट 7-8 साल का बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे about the pressure? No, I mean, my take is that जैसे अशोक जी ने राइटली बोला कि हम बड़ी शिद्दत से मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि जैसे इसलिए आज आप लोग को भी बुलाया है कि इसको स्प्रेड आउट करिए कि जास्ती फिल्में आएँ, और हमारी बहुत एफिशिएंट और बहुत अच्छी जूरी हम कोशिश करते हैं बेस्ट मेंबर्स लोगों को लाएँ कि अच्छी फिल्म सेलेक्ट करें, एंड टोटल ट्रांसपेरेंसी इज देयर, एंड एज just now said, I am also associated with this association last 12 years, 3 साल से मैं सेक्रेटरी हूँ। ये सब चीज़ें FFI में मेरे 12-15 साल में तो नहीं हुई, and we are not affected also because once the jury is selected, it is totally in their jurisdiction to select the film. See, we don't even go and go there also. मतलब it is totally nobody is allowed to go and meet them also. Once they are, the screening starts, it's totally they are in the hotel and they only go, and so there's total transparency in that. And we as a body, प्रदोष जी जिसको हेड कर रहे हैं, हमारा काम जो है वो फिल्म मेकर्स को एडवाइस करने का नहीं है या गेज करने का नहीं है कि इस बार इसको क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं। We are just facilitators of sending a film to Oscar. That's all. Period. हम हमारा काम उसको एनालाइज करने का नहीं है, हमारा काम उसको ये करने का नहीं कि ये क्यों नहीं गई और क्यों गई है। We as an organization, critical organization, decides a jury selects a film and goes, matter ends there. But It's as simple as that. As a filmmaker, what do you think, Ashok? As a filmmaker, what do you think needs to be done so that at least we reach there? Anything that the kind of cinema that may work for us, because we are trying very hard. Bharti, every filmmaker is as intelligent as anybody else here. So as I rightly told you, I cannot tell great filmmakers कि आप ऐसी फिल्म बनाइए ताकि आप ऑस्कर में जाओगे। इसका कोई डिसीजन ही नहीं दे सकता, कोई बात ही नहीं कर सकता इसके बारे में। So this argument doesn't hold any water as far as FFI is concerned, any organization is concerned, anybody who's trying to send the film there, ये हमारे एरिया में आता ही नहीं है। फिल्म बनाने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं अरे एनालाइज भी करना। जूरी कौन डिसाइड करता है? हाँ? जूरी कौन फेडरेशन आप डिसाइड करते हैं। तो जो जूरी डिसाइड की जाती है, तो वो जो जूरी है, वो जूरी अगर इतने सालों से नहीं हो रहा है कुछ या उस तरह की फिल्में हमारी नहीं आ पा रही, तो कहीं हमें जूरी की तरफ देखने की जरूरत है। सर जूरी के पास जो पिक्चर आते हैं उसका अंदर जो उनको बेस्ट लगता है वो भेजते हैं। जूरी तो पिक्चर नहीं बनाते, उनके पास पिक्चर, जब हमारे पास पिक्चर जो आते हैं 30 पिक्चर हो 40 पिक्चर हो, तो जूरी ट्राइज टू फाइंड द बेस्ट आउट ऑफ दैट लॉट विच केम, उसके अंदर जो जूरी को बेस्ट लगता है वो भेजते हैं। और दूसरा चीज वो जो आप पूछे तो जो अशोक जी ने जवाब दिया कि एडवाइजरी बोर्ड और एडवाइस, दो थिंग इज दैट सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे क्यों नहीं मिल रहा है, जैसे आप मेरे को पूछ रहे हैं,
मैं भी आपसे पूछता हूँ, यू आर ऑल्सो स्टेक होल्डर, इंडस्ट्री का अगर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो मीडिया है, फिल्म मीडिया। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं जस्ट बोल रहा हूँ, इट इज ऑल्सो योर ड्यूटी टू फाइंड आउट क्यों नहीं जा रहा। हम लोग जब फिल्म देखते हैं, रिव्यू करते हैं, हम कहते हैं अच्छा इसमें ये कमी है वो कमी है। आप लोग इतने साल से इससे जुड़े हुए हैं, जूरी आप लोग सेलेक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूछा कि आपको लगता है इतना दिन कितने सालों से आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आदमी सोचता है तो भाई इतना ही काम थोड़ी होता है कि हमने जूरी सेलेक्ट कर दिया उसके बाद वो लोग देखेंगे कि फिल्म जाती है नहीं जाती। मेरा कहने का मतलब एज ए स्टेक होल्डर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। डेफिनेटली हम तो वही बोल रहे, तो हमारे पास जो पिक्चरें आते हैं उसके अंदर से जो बेस्ट है वो हम भेजते हैं। ऐसा भी होता है कभी कि फिल्म आपके पास नहीं आई और आपको लगता है ये फिल्म बेटर है, तो उस फिल्म प्रोड्यूसर को बुलाया जाए डायरेक्ट कि आप अपनी फिल्म भेजिए। क्राइटेरिया नहीं है ऐसा सी मोरलेस in the industry, people who knows that his films can be choice go for Oscar, वो सबमिट करते हैं। डेफिनेटली हमारे जो ऑल इंडिया नेटवर्क है, हम लोग हर प्रोड्यूसर को इन्फॉर्म करते हैं। So it is up to them whether they want to apply, want to submit or not. That is up to them. And then what Mr. Ashok told that our work is to find the best out of the lot which we get. सर क्या कभी ऐसा वक्त आएगा कि हम अपनी जो फिल्में हैं वो जो टॉप कैटेगरीज होती है बेस्ट पिक्चर की, उसमें हमारी फिल्म जाए और विन करे? वी हैव टू थिंक अबाउट दैट वे rather than sending in फॉरेन वाला। है जो मैं आपको शुरू में बताया था, since we are the largest film production country in the world, हम लोग फिल्म फेडरेशन में क्या कर सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया से एक नहीं और ज्यादा पिक्चरें जानी चाहिए। That we can Of course, that has to be there. कैसे जैसे अशोक जी ने बताया, कैसे एडवाइजरी बोर्ड बोल के हम लोग, हमारे पास वो चीज नहीं है कि ये करने से ऑस्कर मिल जाएगा। वो अगर हमको पता था तो मैं ही बना लेता पिक्चर जो ऑस्कर चलेगा। That is no one knows. It is very difficult. We have to keep on trying. अशोक सर, एक सवाल मेरा था, जूरी से रिलेटेड ही था, थोड़ा अलग सा सवाल था कि शायद थोड़ी देर पहले कहा गया कि अगर मैं गलत नहीं तो मैंने सही सुना हो तो कि मिनिमम 11 मेंबर्स जूरी में होने चाहिए और मैक्सिमम 19 हो सकते हैं, शायद यही कहा था। तो मेरा ये कहना है कि पूरे भारत में अलग अलग राज्यों से फिल्में आती है, अलग अलग भाषाओं से फिल्में आती हैं, तो जूरी में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है जूरी मेंबर को? क्योंकि कोई अगर मलयाली फिल्म आ रही है तो बॉलीवुड में बैठा जो जूरी है उससे उस भाषा की, उसका रूटेडनेस, वहाँ के रॉनेस उतनी समझ में नहीं आएगी जितनी साउथ वाले को आएगी। तो आप लोग वो रिप्रेजेंटेशन का ख्याल रखते हैं कि वहाँ से भी हो, यहाँ से भी हो, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो जूरी का? नहीं, भाषा के आधार पर more or less we try to get maximum language to film बनते हैं, like from the west if you see Gujarati, Hindi and Marathi, साउथ का 4 लैंग्वेज और ईस्ट से मेनली बंगाली। तो more or less ये हम लोग कवर करते हैं। Sometimes we take from Assam और त्रिपुरा from the east और इधर से पंजाब। So we try to cover most of the language, prime languages जिसमें फिल्म बनते हैं। सर एप्लीकेशन फी कितना होता है पर अगर एप्लीकेशन? It's there in the website, ma'am. What is the amount? But if I want to know, what is the amount, Dharamji? It's 125. 1,25,000. मेरा 2 सवाल है। अशोक या anybody else from the guys can answer that? एक सवाल है कि अलग अलग जोन से लोग सेलेक्ट करते हैं फॉर द ऑस्कर विनिंग फिल्म अबाउट टू विन। सो आप उनमें से किसको चेयरमैन बनाएंगे? Whether somebody from federation will take up the job of the chairmanship or you decide, ask them to decide among themselves. फेडरेशन से वी डोंट गेट इनटू दिस थिंग, फेडरेशन से कोई चेयरमैन बनते नहीं है। तो जनरली आप अगर लास्ट 8, 10, 12 साल का देखिएगा तो चेयरमैन डेफिनेटली अ सीनियर पर्सन हु हैव अ रेपुटेशन एंड हु हैव डन अ कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन टू दिस इंडस्ट्री, वही हिसाब से वही पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं। From among the members who are voting for that? Not
we try to get a senior person for the chairman. That if you see the last 8-9 chairman, last year Mr. Ye tha na, from Assam, Jhanu Barwa, last time Jhanu Barwa was there. I think he got the maximum national award, 9 to 10 national award from the East. So like this we select, way back in 2019 in Calcutta, Aparna Sen was the chairperson. So basically we try to get someone who is the senior in the industry and who have a good knowledge of international film. Thank you. Sir, can I ask?